हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स-o-mania। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r is put over another uniform disk of radius 2r of the same thickness and density. The peripheries of the two disks touch each other. Locate the center of mass of the system. So here you can see that this bigger disk is having the radius of 2r. So this is the center of the bigger disk and its radius is 2r. And a uniform disk of radius r here, this is the uniform disk of radius r, that the center of the bigger disk is o and that of the smaller disk is c. Now here you can see the peripheries of these two disks are touching each other. Okay, so here now we have to find the center of mass of the system. To find the center of mass, we will choose some point as the origin. So let us choose the center of the bigger disk to be at the origin, that is 0 comma 0. And if this is origin, then we can say the center of the coordinate of the center of the smaller disk, that will be equal to r comma 0. So here we will only talk about the x coordinate because there is no y coordinate. The y coordinate of center of mass is at 0. Okay, so here x coordinate of center of mass ये क्या हो जाएगा? Let the mass of the bigger disk is m and that of the smaller disk is m dash. So ये हो जाएगा m into 0 plus of m dash into r, okay, upon sum of mass m plus m dash. So यहाँ से ये हो जाएगा m dash into r upon m plus m dash. अब हमें m dash की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, और हमें मास भी दिया नहीं गया है बड़े डिस्क का। सो हमने तो ये एज्यूम किया था कि m और m dash है, तो हम इसे कैसे रिप्लेस करेंगे? सो यहाँ पे क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, बोथ द डिस्क हैव सेम थिकनेस एंड डेंसिटी, ठीक है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ bigger disk that will be equal to sigma of smaller disk, that is mass per unit area constant होगा, सेम होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं m अपॉन पाई इंटू रेडियस ऑफ बिगर डिस्क क्या है 2r, पाई आर स्क्वायर दैट इज एरिया, एंड m डैश एंड एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क क्या है पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से पाई एंड आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो m डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी m/4। अब इस m डैश को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m/4 इंटू आर अपॉन m प्लस m/4। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये mm कैंसिल हो जाएगा, ऊपर r आ जाएगा और हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया r/5। सो हम कह सकते हैं द सेंटर ऑफ मास, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा r/5 कॉमा 0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क टू द राइट ऑफ द center, that is towards the smaller disk, because ये r/5 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स अगर हमने इसे ऑरिजिन माना था 0,0 सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, तो r/5 जो है इसके राइट साइड में होगा, ठीक है। सो ये हो गया आंसर। थैंक यू।